Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Study with Subhamsir classes. So, ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମର at the high school chapter ପଢେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପଢିଥିଲେ at the high school. I hope ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଥିବ ଯଦି ଯେ ନ ବୁଝି ପାରୁଛ ବାରମ୍ବାର କି ତମକୁ କହୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣାଅ କି ମ୍ୟାମ ଆମେ ଏଟା ବୁଝି ପାରୁନ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି बट मते जहा लागुची तमे जो माने कमेंट दउन मते लागुची तुम सब बुझा पड़ी जाउची बोली भलरे बुझी जाउचो सेथि पई किछि कमेंट दउन कि किछि बुझी पारुनी बोली कहूना ठीक अछि आमे पढितले आज कोन करबा आज हमर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा आज एमसीक्यू डिस्कशन करबा ठीक अछि एमसीक्यूज हमर डिस्कशन करबा ए टू जेड क्वेश्चंस अछि एथिरे आमे डिस्कशन करबा सबु गोटे परे गोटे ठीक अछि तमे भी जल्दी जल्दी कमेंट करो आंसर सब कमेंट करो ऑप्शन कमेंट करो ठीक अछि देखो स्टार्ट करबा तमरो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फर्स्ट क्वेश्चन देछि इन व्हिच ईयर वाज महात्मा गांधी बर्न ताले तमे समस्ते जानिथिबो कारण सब वर्ष तमे गांधी जयंती पालन करूछ केबे अक्टोबर 2 रे पालन करूछ भाषण भी दउछ ना नहीं भाषण कोठु आरंभ करूछ महात्मा गांधीଙ୍କର जन्मରୁ आरंभ करूछ ताले कुहाबे महात्मा गांधीଙ୍କର जन्म केबे होइथिला 1869 1879 1889 ना 1859 केबे 1869 में हेथिला देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि महात्मा गांधी इज पॉपुलरली कॉल्ड व्हाट ताले महात्मा गांधी को कोन बोली संबोधन कर जाउथिला कोन बोली डका जाउथिला तांकू कोन पई से प्रसिद्ध द ग्रेट सोल द फादर ऑफ द नेशन द आयरन मैन द फर्स्ट सिटीजन कोन कुआ जाय देखो द फादर ऑफ द नेशन जातिर पिता बोली तांको कुआ जाय तापरे कोन देछि इन व्हिच स्टेट इज राजकोट लोकेटेड ताले राजकोट केउ स्टेट रे अछि केउ राज्य रे राजकोट अवस्थित महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात पंजाब कोठी गुजरात रे अछि then next question what was the Rajkot High School renamed to after 1947 ताले 1947 परे राजकोट हाई स्कूल को केउ नाम रे पुनर्नामित करा जायछि बा तार ना चेंज करके कोन करा जायछि महात्मा हाई स्कूल गुजरात नेशनल स्कूल इंडिपेंडेंस हाई स्कूल मोहनदास गांधी हाई स्कूल कोन मोहनदास गांधी हाई स्कूल जेहेतु मोहनदास महात्मा गांधी सेठी पढुथिले सेठी पई तांको ना रे नामित करा जायछि 1947 परे हला तापरे कोन देछि एट व्हाट एज डिड गांधी मैट्रिकुलेट ताहले केते वर्ष बयस रे गांधी जी मैट्रिक पास करिथिले केते वर्ष बयस रे 18 इयर्स ओल्ड रे से मैट्रिक पास करिथिले तापरे which subject was गांधी noted to be weak in ताहले केउ सब्जेक्ट रे weak थिले बोली गांधी जी कहिथिले केउ सब्जेक्ट टी तांकर दुर्बल थिला इंग्लिश ज्योग्राफी अरिथमेटिक संस्कृत को सब्जेक्ट ज्योग्राफी वेरी गुड देन which subject was गांधी noted to be good at ताले केउ सब्जेक्ट रे गांधी जी भलो थिले बोली कहिथिले इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री अरिथमेटिक कोन इंग्लिश रे से भलो थिले देन हाउ वाज गांधी's handwriting described during his student days ताले गांधींकर हस्ताक्षर किभली थिला बोली डिस्क्राइब करा हिचे तांकर जेते बेले
स्टूडेंट थिले सी गांधी जी जते स्टूडेंट थिले सेते बळे तांको अक्षर केमते थिला बोली कहा जाईची ब्यूटीफुल एवरेज बैड और एक्सीलेंट कि भली थिला बैड थिला खराब हैंडराइटिंग थिला तांकर देन from which chapter of his autobiography is this text extracted ताले तांकर जो ऑटोबायोग्राफी थिला से ऑटोबायोग्राफी रो केउ चैप्टर रु तमरो ई जो विषयटा पढुचार दे हाई स्कूल विषयटा आसी अछि फर्स्ट चैप्टर 1 चैप्टर 10 चैप्टर 5 चैप्टर 3 को चैप्टर रु चैप्टर 5 रु तांको ऑटोबायोग्राफी ना कोन थिला माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रो चैप्टर 5 रु तमरो एट द हाई स्कूल विषयटा आसी अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज गांधीजी's nickname during his childhood according to the text ताले according to the text माने तम बही रो लेखा अनुसारे गांधीजींकर डाकना कोन थिला पिला दिने तांको डाकना कोन थिला मोनिया बापू महात्मा सरदार कोन थिला मोनिया थिले बा मन्नू थिला तांको मन्नू बोली डाकू थिले बा मोनिया बोली डाकू थिले देन हु वाज दोराबजी इदुलजी जिम्मी ताले दोराबजी इदुलजी जिम्मी किए थिले द संस्कृत टीचर द हेडमास्टर द पर्शियन टीचर द ज्योग्राफी टीचर किए थिले द हेडमास्टर थिले तापरे which standard did Gandhi start receiving scholarship in ताले को स्टैंडर्ड रे गांधी जी को स्कॉलरशिप मिली थिला गांधी जी को स्कॉलरशिप मिली थिला फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ को क्लास रे फिफ्थ क्लास रो मिलु थिला तांको तापरे what was the amount of the scholarship Gandhi obtained in the fifth standard ताले फिफ्थ स्टैंडर्ड रे तांको केते टंका स्कॉलरशिप आकार रे मिली थिला गांधी जी को 2 रुपीस 4 रुपीस 10 रुपीस 5 रुपीस केते रुपीस मिली थिला तांको 4 रुपीस मिली थिला सेते बळे 4 टंका रो मूल्य भी बहुत थिला सेते पई कोन तांको 4 टंका स्कॉलरशिप दिया जाई थिला पंचम क्लास रे तापरे what was the amount of the scholarship Gandhi obtained in the 6th standard ताले 6th स्टैंडर्ड रे तांको केते टंका स्कॉलरशिप आकार मिले थिला 10 रुपीस 4 रुपीस 20 रुपीस 50 रुपीस केते 10 रुपीस फोर्थ क्लास रे तांको मिलु थिला जो फिफ्थ क्लास रे तांको मिलु थिला 4 रुपीस सेटा बढ़े की 6th क्लास रे जाइथिला 10 रुपीस हला तापरे which two sports did the headmaster make compulsory ताले हेडमास्टर जे थिले के थिले दोराबजी अब्दुल जी जिम्मी से केउ देटा स्पोर्ट्स को कंपलसरी करैथिले को देटा स्पोर्ट्स को बाध्यतामूलक करैथिले टेनिस एंड क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट बैडमिंटन एंड जिम्नास्टिक्स कोडा को जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट को बाध्यतामूलक करैथिले तापरे Who did Gandhi wish to serve after school ताले स्कूल सरीबा परे स्कूल छुट्टी हेबा परे गांधी जी कहार सेवा करबा को चाहुथिले his mother his teacher his brother his father कहार his father हला तापरे what was the name of Gandhi's Sanskrit teacher ताले गांधींगर संस्कृत टीचर जे थिले से संस्कृत टीचर को ना कोन थिला कृष्णा शंकर पांड्या दोराबजी जिम्मी करमचंद मन्नू कोन थिला कृष्णा शंकर पांड्या तापरे इन व्हिच ईयर डिड गांधी पास अवे ताले गांधी जी केउ ईयर रे मृत्युवरण करथिले 1950 1948 1947 1945 केबे 1948 रे ठीक अछि तापरे what did Gandhi say he jealously guarded ताले ता माने कोन गांधी जी काहाकू गांधी जी कोन को जिनिसटा को कोन को माने कोन जेलसली गार्डेड माने कोन
ଯତ୍ନର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କାହାକୁ? ହିଜ ବୁକ୍ସ, ହିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହିଜ ମନି, ହିଜ ଟାଇମ। କାହାକୁ? ହିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ। ତାପରେ how did Gandhi react when he received the least little blemish? ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଲିଟିଲ ବ୍ଲେମିଶ ମାନେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା? He got angry, he ignored it, he drew tears from his eyes, he argued with the teacher। କଣ? He drew tears from his eyes ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକି ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ରିସିଭଡ୍ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ? 5th or 6th, 7th, 1st or 2nd, 3rd or 4th? କୋଉ କ୍ଲାସ ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 1st or 2nd କ୍ଲାସ ରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଢିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, why was the headmaster Mr. Jimmy popular among the boys? ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି କଣ ପାଇଁ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ? He gave free books, he was a disciplinarian and good teacher, he cancelled classes often, he taught Persian। କଣ? He was a disciplinarian and good teacher। ତାପରେ what false notion did Gandhi hold regarding gymnastics? ତାହେଲେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା? It was too dangerous, it was only for athletes, it had nothing to do with education, it was too expensive। କଣ ଥିଲା? It had nothing to do with education। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କୁ ନେଇକି। Then next question କଣ ଦେଇଛି? At what time was the compulsory gymnastic class on that specific Saturday? ତାହେଲେ ସେଇ स्वतंत्र ଶନିବାର ଦିନ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯୋଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ ଥିଲା, ସେଟା କେତେ ଟାଇମ ରେ ଥିଲା? 10 o'clock in the morning, 2 o'clock in the afternoon, 4 o'clock in the afternoon, 6 o'clock in the evening। କେତେବେଳେ ଥିଲା? 4 o'clock in the afternoon, 4ଟା ବେଳେ ଥିଲା, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ଥିଲା। Next question, what deceived Gandhi causing him to be late for gymnastics? ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ସକାଶେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ? କଣ ଥିଲା? The sun, the headmaster, the clouds, his watch। କଣ? The clouds। ତାକୁ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କଣ କରିଥିଲେ? ଭ୍ରମରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଡି ନଥିଲା, ଯୋଉ ବାଦଲ ଥିଲେ, ଯୋଉ ମେଘ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ how much fine did the headmaster order Gandhi to pay? ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦବାକୁ ହେଡମାଷ୍ଟର କହିଥିଲେ, ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା? 10 rupees, 1 or 2 annas, 4 rupees, 5 annas। କେତେ? 1 or 2 annas, 2 ଅଣା ତାଙ୍କୁ କଣ ଜୋରିମାନା ଦବାକୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, being convicted of lying taught Gandhi that a man of truth must also be a man of what? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? କି ଜଣେ ଲୋକ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ସହିତ ଆଉ କଣ ହବା ଦରକାର? କରେଜ, କେୟାର, ୱେଲ୍ଥ, ସାଇଲେନ୍ସ। ଜଣେ ଯଦି ସତ କହୁଛି, ଜଣେ ପାଖରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତା ସହିତ ସତ୍ୟତା ସହିତ ଆଉ କଣ ରହିବା ଦରକାର? କରେଜ, କେୟାର, ନା ୱେଲ୍ଥ, ନା ସାଇଲେନ୍ସ? କଣ ରହିବା ଦରକାର? କେୟାର ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକଟି ଯତ୍ନଶୀଳ ହବା ଦରକାର। ବିନା ଯତ୍ନରେ ସେ ଯେତେ ସତ କହିଲେ ବି ତାକୁ
ता भूल पाई दोषी साब्यस्त करा जाए ठीक अछि तापरे in which country did Gandhi realize the importance of good handwriting ताले को देशरे गांधी कोन भलो हैंडराइटिंग रो इंपोर्टेंस जानिबा को पाइले बुझिबा को पाइले इंग्लैंड अमेरिका साउथ अफ्रीका अमेरिका इंग्लैंड इंडिया साउथ अफ्रीका ना अमेरिका कोडी साउथ अफ्रीका रे से दोले ओकिलो माने जो थिले यंग मैन माने जो लोक माने थिले तांकर जेतबे हैंडराइटिंग सुंदर हैंडराइटिंग देखिले से सेतबे रियलाइज कले कि केते इंपोर्टेंस अछि गोटे गुड हैंडराइटिंग रो इंपोर्टेंस केते अछि बोली से अनुभव कले तापरे अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट शुड चिल्ड्रन बी टॉट फास्ट बिफोर लर्निंग टू राइट ताले गांधी को कहिबा अनुसार गोटे पिला कोन पाठ पढिबा आगरु बा लेखिबा आगरु कोन सिखिबा दरकार ग्रामर रीडिंग अरिथमेटिक द आर्ट ऑफ ड्राइंग कोन द आर्ट ऑफ ड्राइंग से चित्र बनेबा सिखिबा उचित लेखिबा आगरु से चित्र बनेबा सिखिबा उचित ठीक अछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टैंडर्ड वाज संस्कृत इंट्रोड्यूस्ड ताले को स्टैंडर्ड रे में को क्लास रे तांको संस्कृत तांकर स्टार्ट हेतला संस्कृत पढिबा स्टार्ट हेतला को क्लास रे सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेवेंथ को क्लास रे फोर्थ क्लास रे चतुर्थ श्रेणी रे तांकर संस्कृत स्टार्ट हे जाइथिला तापरे इन व्हिच स्टैंडर्ड डिड गांधी बिकम डिसहार्टेंड विथ संस्कृत ताले को क्लास रे तांको कोन अनुत्साहित हेथिले संस्कृत पढिबा पई से अनुत्साहित हेथिले 6th क्लास 4th क्लास 5th क्लास 7th क्लास को क्लास 6th क्लास रे जेतेबेले से पहुंचले चतुर्थ रु तांकर संस्कृत पढिबा आरंभ होइला 6th क्लास रे तळे से पहुंचले सेतेबेले से पूरा अनुत्साहित हेई सारी थिले संस्कृत पढिबा पई तांकर उत्साह आउ नथिला तापरे हाउ डिड द बॉयज describe the Persian teacher ताले बालक माने पर्शियन टीचर नगर describe वर्णना केमति करथिले वर्णना तांकर केमति करथिले strict and angry good and considerate weak and quiet jealous and harsh कोन good and considerate ठीक अछि विचारशील एवं भलो बोली तांको वर्णना करिथिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन What religion did the Sanskrit teacher remind Gandhi that his father followed? ताले संस्कृत टीचर गांधी जी को केउ धर्म विषय मने पकई थिले जोटा के तांको बापा फॉलो करूथिले जोटा के तांको बापा मानुथिले का बापा गांधी जी को बापा मानुथिले शैव वैष्णव जैन बुद्धिस्ट को रिलीजन वैष्णव तापरे What does the word blemish mean according to the glossary? ताले blemish माने कोन according to the glossary blemish माने कोन a physical scar a good mark a moral defect a mistake in writing कोन a moral defect ता माने होची गोटे moral defect ठीक अछि तापरे What does the term anguish mean according to the glossary? ताले anguish माने कोन severe mental suffering slight confusion great happiness physical illness कोन severe mental suffering माने मानसिक विषाद मानसिक दुख anguish माने ठीक अछि तापरे What does the phrase be non the worse mean? Be non the worse माने कोन to become evil to not be harmed or affected by something to fail completely to lose all hope be non the words माने कोन to not be harmed or affected by something कोनोसी जिंस द्वारा हार्म न होबा क्षति न होबा बा अफेक्ट न होबा तापरे which book did Mahatma Gandhi write besides my experiment with truth ताहले my experiment with truth को छाड़ी देले गांधी जी आउ केउ बही लिखिचंदी the discovery of India गीतांजलि हिंद स्वराज wings of fire को लिखिचंदी हिंद स्वराज लिखिचंदी my experiment with
ट्रुथ को छाड़ी देले हिंद स्वराज से लिखिछंदी तापरे गांधी सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस एम्प्लॉयड व्हाट मेन प्रिंसिपल ताले गांधी जी मुख्य जो प्रिंसिपल थिला मुख्य उद्देश्य जो थिला कौन इंडिया रो इंडिपेंडेंस भारतर स्वाधीनता पाई तांकर जो सक्सेसफुल कैंपेन से करिथिले जो यात्रा आरंभ करथिले भारतर स्वाधीनता पाई तांकर मुख्य धर्म सेथरे कोन थिला आर्म्ड रेबिलियन नॉन वायलेंस फॉरेन डिप्लोमेसी फाइनेंशियल बॉयकॉट्स कोन थिला नॉन वायलेंस अधर्म थिला बा सॉरी अधर्म नुह अहिंसा अहिंसा थिला तांकर मुख्य धर्म जोटा कि पालन करके से कौन सफल होइथिले भारत को स्वाधीन करिबारे सफल होइथिले ठीक अछि तापरे What reason did Gandhi give for his aloofness from exercise before it was made compulsory? ताले गांधी जी कहा को दोष देते तांकर जो एक्सरसाइज पाई तांकर जो कर छड़ा नीति थिला तांकर माने दूरे रहुतले जो एक्सरसाइज ठारू दूरे रहुतले एटा कंपलसरी हवा पूर्व एक्सरसाइज टा कंपलसरी हवा पूर्व जो दूरे रहुतले तार कारण कोन थिला एरोगेंस लेजीनेस साइनेस और पॉवर्टी कोन थिला साइनेस थिला तांकर जो लज्जा रो नेचर लाजेबा जो गुण थिला सेथि पई से एक्सरसाइज ठारू दूर रे रहुथिले बा कर छड़ा जाउथिले तापरे How did Gandhi ultimately get exempted from compulsory exercise? ताले गांधी जी किभଳି भाबरे जो compulsory exercise थिला सेतरु मुक्त होइथिले He forgot a doctor's note. His father wrote to the headmaster. He paid a large fine. He won a gymnastic competition. कोन हेतिला His father wrote to the headmaster. तांको बापा कोन करथिले चिठी लिखिथिले हेडमास्टर पाखको लिखिथिले सेथि पई से कोन कंपलसरी एक्सरसाइज रो मुक्त हेथिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड गांधी कंसीडर टू बी ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन लेटर इन लाइफ ताले गांधी जी गोटे असंपूर्ण शिक्षार साइन बोली काहा को कहिथिले परे से गोटे अधूरा एजुकेशन बा अधूरा शिक्षार साइन बोली काहा को कहिथिले बैड हैंडराइटिंग वीकनेस इन ज्योग्राफी इनएबिलिटी टू प्ले क्रिकेट और पुअर मेमोरी काहा को बैड हैंडराइटिंग को कहिथिले गोटे खराब अक्षर बा खराब हस्ताक्षर गोटे असंपूर्ण शिक्षार परिचय दिए बोली से कहिथिले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन Why did Gandhi think Sanskrit was harder than geometry? ताले कौन पाए गांधी जी भाबुथिले संस्कृत ता ज्योमेट्री ठारू अधिक कष्ट बोली The teacher was angry. Everything had to be learned by heart. It had complex drawings. The books were expensive. कौन Everything had to be learned by heart. सबु को मुखस्त करबा को पडुथिला सेथि पई संस्कृत ता तंको हार्ड लागुथिला ठीक अछि Next question. How did the Sanskrit teacher react when Gandhi sat in the Persian class? ताले गांधी जी जेतबळे पर्शियन क्लास अटेंड करिथिले पर्शियन क्लास रे बसिथिले सेतबळे तांकर संस्कृत टीचर किभଳି रिएक्ट करिथिले ठीक अछि कोन देछि he was relieved he laughed he was grieved he punished him कोन he was grieved से बहुत दुखित होइथिले दुखरे मर्माहत होइथिले जेतेबेले तांकू पर्शियन क्लास रे देखिथिले का हो गांधी जी को नेक्स्ट क्वेश्चन according to the Sanskrit teacher what would Gandhi find in the language as he proceeded further ताहले आगो को बढ़िला परे ताले आगो को बढ़िला परे गांधी से जो लैंग्वेज संस्कृत तांको किभଳି लागिबो बोली संस्कृत टीचर कहिथिले डिफिकल्ट ग्रामर एंडलेस मेमोरी मेमोराइजेशन थिंग्स ऑफ ऑब्जर्विंग इंटरेस्ट स्ट्रिक्ट रूल कोन
थिंग्स ऑफ अब्सॉर्बिंग इंटरेस्ट माने सेइथिरे धीरे धीरे तांकर इंटरेस्ट बढ़िबो बोली तांकर संस्कृत टीचर कहिथिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द प्रीफिक्स un बा on in on variable signify तले प्रीफिक्स टा कोठी यूज करा है on variable रे again before opposite or negative meaning more than कौन कहूची opposite or negative meaning माने bearable रो negative टा हो बा opposite टा हो on bearable बुझिला जोटा कि हमको विपरीत शब्द रो परिचय दउची नेक्स्ट क्वेश्चन which grammatical tense is primarily highlighted in the sentence before I reached the school the boys had all left ताले ए जो वाक्यटा देला ए जो सेंटेंसटा देला कोन बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज हाड ऑल लेफ्ट सेथिरे को टेंस यूज करा हिची प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस ताले से कौन कहउजंदी से कहउजंदी कि मु जतबेले स्कूल रे पहुंचली सेतबेले सबु पिला जाई सारी थिले ताले कोन होबो एटा पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट ठीक अछि तापरे if an event is described as an unreal condition in the past which structure is used according to the grammar section ताहले गोटे घटना जदी कोन पास्ट रे डिस्क्राइब करा हैथिबो कोन अनरियल कंडीशन माने कंडीशन टा रियल हे नथिबो ताले आ भितर को स्ट्रक्चर टा यूज करा हबो if plus subject plus present tense ना if plus subject plus had not plus verb रे en लागिबो और subject plus should plus have plus कोन verb रे en लागिबो ना subject plus will plus verb plus if ना subject plus has plus en लागिबो verb रे कोडा हबो if लागिबो subject लागिबो had not लागिबो आउ verb रो कोन हबो verb रे en लागिबो ता सहित सब्जेक्ट रहइबो should रहइबो have रहइबो verb रे en रहइबो तापरे what is the correct prefix to add to obedient to give it a negative meaning ताले आकु गोटे नेगेटिव मीनिंग दबा कहा को obedient को गोटे नेगेटिव मीनिंग दबा को आ भीतर को प्रीफिक्स लगेबा on means this in कोन disobedient देखो ग्रामर पार्ट मु खाली तुमको एबे कहि दउची हमें ग्रामर बहुत जल्दी स्टार्ट करबा पूरा फर्स्ट रु हमें स्टार्ट करबा पूरा एठू स्टार्ट करबा ग्रामर स्टार्ट करबा ठीक अछि एबे खाली मु तुमको आंसर कहि दउची हमें ग्रामर जेतबे स्टार्ट करबा सेतबेले तुम बुझी पारिबो ठीक अछि तापरे what is the correct prefix to add to transitive to from its opposite ताले transitive रे को प्रीफिक्स ऐड कले सेटा तार ऑपोजिट हबो in on this ir कोन हबो intransitive in ऐड कले सेटा तार ऑपोजिट हबो तापरे which word accurately completes this sentence from the vocabulary section the stranger did not talk in a dash manner ताले आ भितरो को एटा accurately कंप्लीट करूची सेंटेंस टाको लेजिबल polite possible bearable कोन polite माने नम्र polite माने नम्र तापरे what is the correct preposition to use in the sentence आ भितर correct preposition कोटा ए सेंटेंस रे यूज करबा को people are dash the opinion that price controls are losing ground कोन in with of to कोटा of ठीक अछि तमरो प्रीपोजिशन एका सब मु पढेबी व्यस्त होनी तमे सब मु पढेबी टिके वेट कर ठीक अछि देखो choose the correct preposition for the sentence she was deeply upset dash her behavior at the party with from among of कोन हबो आंसर of her behavior ता behavior पाई से deeply ashamed अछि
Choose the correct preposition for this sentence. Charities are exempted as paying tax. তাহলে charities are exempted as paying tax. From, with, into. କଣ ହବ? From. କଣ ହବ? From. ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ choose the correct preposition for the sentence. The officer was convicted as bank fraud. In, of, with, to. କଣ ହବ? Of. ତାପରେ choose the correct preposition for the sentence. India succeeded dash winning the World Cup cricket that year. Of, in, from, to. କଣ? In ହବ. ତାପରେ according to the text grammar notes, an event taking place earlier than another past event should use which tense? তাহলে କୋଉ tense use କରାହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କଣ past ରେ ହେଇଥିବା ଇଭେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେସ୍ ନିଏ ସ୍ଥାନ ନିଏ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାହବ? ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ. କଣଟା? ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ यूज କରାହବ. ତାପରେ complete the conditional sentence. If our boys had played well, our team dash the match easily. Will win, would have won, wins, had won. କଣ ହବ? would have won. ତମକୁ ସେଇଟା structure ପଢେଇଥିଲି. structure ଗୋଟେ question ଥିଲା କଣ ଥିଲା? if ଲାଗିବ, subject ଲାଗିବ, ଆଉ କଣ? had ଲାଗିବ ଆଉ verb ର third form ହବ. ତା ସହିତ subject ଲାଗିବ ଆଉ କଣ? should ଲାଗିବ ଆଉ verb ର third form ହବ. ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି. ସେଇଭଳିଆ ଅଛି. ତ ଏଠି answer କଣ ହବ? would have won. ତାପରେ next question. Complete the conditional sentence. Crops would have been better if it dash well. Rains, had rained, rained, will rain. କଣ? ଏଠି hard rain. କଣ ହବ? ଏଇଟା hard rain past perfect ରେ ହବ. ତାପରେ why Gandhi retained the notion that good handwriting was not necessary until he went to England. ତାହେଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନେସେସାରୀ ନୁହଁ, ଗୁଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଦରକାର ନୁହଁ. He did not know whence he got the notion. His teachers told him so. He was too busy with sports. His father had bad handwriting. कौन? He did not know whence he got the notion. से भी जानी नथले तांको पाखरे धारणा कोठू आसिला. तापरे next question कौन देची? What does the idiom be known the words means in the context of Gandhi neglecting his exercise? ताले एटर ए भलिया गोटे पचारि थिला ता idiom रो माने कोन? He was severely punished. He was not harmed or affected by the neglect. He became better at academics. He felt immense guilt. कौन? He was not harmed or affected by the neglect. से जो neglect करिथिले ता द्वारा तांकर किछि प्रभाव पड़ी नथिला, किछि क्षति होई नथिला. Be known the words माने होची कोन? Not harmed or affected by something. ठीक अछि. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची? Why did Gandhi mind receiving corporal punishment less than the fact that it was considered his desert? ताले कौन पाई गांधीजी corporal punishment को एते ध्यान देइथिले बा एते देह को नेइथिले? Because he liked punishment, because he thought he deserved a reward, because meriting a rebuke was unbearable to his character, because he wanted to be expelled. कौन भाई? Because meriting a rebuke was unbearable to his character. तापरे next question. Gandhi's realization that a man of truth must also be a man of care occurred after which specific incident? ताले को incident को घटना परे गांधीजी भाबिथिले
कौन गोटे सत कहूथिबा लोक पाखरे जत्न रहिबा निहाती आवश्यक को घटना परे failing a geometry test, being convicted of lying about his absence from gymnastic, getting caught fighting, writing a letter to his father. कौन being convicted of lying about his absence from gymnastic. ताहले जेतेबेले gymnastic रो absence जोगु से दंडित होइथिले सेतेबेले से कौन रियलाइज करि पारिथिले अनुभव करि पारिथिले कि जणे सत कहूथिबा लोक पाखरे जत्न रहिबा निहाती दरकार तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि what logic does Gandhi provide for learning to draw before learning to write ताले कोन लॉजिक अछि तांको कहिबा पछर जो कोन जणे पिला गोटे पिला लेखिबा पूर्वरु ड्राइंग सिखबा उचित एटा कहिबा पछर कारण कोन थिला to save money on pens. Children can learn letters by observation, leading to beautiful formed hand. To pass geography exams, to avoid physical exercise. कौन children can learn letters by observation. पिला माने देखि देखि करी सिखिबे आउ सेटा तांको कोन करबो गोटे ब्यूटीफुल फॉर्म हैंड्स माने गुड हैंडराइटिंग हबारे सहाय्य करबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखिबा What was the nature of relationship between the Sanskrit and Persian teacher? ताले Persian teacher और Sanskrit teacher का भितरे relationship केमिति थिला? They were best friends. They were brothers. They were a sort of rivalry going on between them. They refused to speak to each other. कौन? There was a sort of rivalry going on between them. ताले तांको भितरे किछि गोटे competition चलथिला बा शत्रुता टाइप रो थिला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन why was the Persian teacher well liked by the students सर पिला मानक द्वारा छात्र मानक द्वारा Persian teacher काहे की कोन तांको भल पाइबा मिलुता पिला मानो ठरो काहे के Persian teacher को भल पाइबा एते मिलुथिला he gave no homework he was lenient and considerate he taught games he gave out money कौन he was lenient and considerate से विचारशील एवं सत्य कौन भल थिले ठीक अछि पिला माननको सहाय्य सहयोग करूथिले तापरे how did Krishna Shankar Pandya persuade Gandhi to return to the Sanskrit class ताले कृष्ण शंकर पांड्या गांधी जी को किभली भाबरे संस्कृत क्लास को फेरे आनिले by threatening him with punishment by appealing to his religion and offering help by giving him a scholarship by complaining to the headmaster किभली भाबरे by appealing to his religion and offering help तांको रिलीजन माने धर्म विषय कही आउ ताको सहाय्य करिवार प्रतिश्रुति देई से संस्कृत क्लास को पुणी फेरे आनिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन why did Gandhi state he had to thank good luck more than my merit for his scholarship ताले गांधी जी कोन पई थैंक जणौथिले माने धन्यवाद जणौथिले तांको लक को तांकर अध्यवसाय ठारू तांकर पढ़ा ठारू सी कोन पई तांको लक को अधिक धन्यवाद करूथिले तांको जो स्कॉलरशिप मिलुथिला कोन पई he cheated on the exam he bribed the teacher he did not have any high regards of his own ability his father bought them कोन he did not have any high regard for his own ability ताले तांकर दक्षता ऊपर तांकर सेति की भरोसा नथिला सेति की आशा नथिला सेति पई से तांको लक को तांको पढ़ा ठारो अधिक धन्यवाद जणौथिले तापर नेक्स्ट क्वेश्चन what exactly did the headmaster examine on the day after the gymnastic incident ताले gymnastic incident परे headmaster कोन एग्जामिन करथिले परदिन कोन एग्जामिन करथिले गांधी's homework the role the cricket bats गांधी's uniform कोन the role किए प्रेजेंट अछि किए एब्सेंट अछि से कथा से देखि दिले तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन what does the word jealously mean as defined in the glossary ताले jealously माने कोन being angry at other success being afraid of losing what you have
being greedy for money, being overly proud. कौन? being afraid of losing what you have. तुम पाखे कौन अच्छी ताकू हरेबार डर. ठीक अच्छी. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the prefix for the word legible to give it a negative meaning? ताले legible को negative करिबा को prefix use करा हबो? Dis, in, ill, miss. कौन? ill. IL use करा हबो. illegible. ठीक अच्छी. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the prefix for the word understand to give it a negative or wrong meaning? ताले understand को negative करिबा को हेले को prefix use करा हबो? Miss, this, in, on. कौन? miss use करा हबो. misunderstand. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which phrase best replace not limited in the sentence human wants are not limited? ताले को phrase टा आ भितरु not limited रो replace हेई परिबो. ए जो sentence लिखा है जे human wants are not limited. ए sentence रे को आ भितरु कोटा replace करा जाई परिबो जोटा कि not limited रो अर्थ को भी बुझौथिबो. कोटा limitless, impossible, unlimited, unbound. कौन? unlimited. ठीक अछि. तापरे in the sentence I do not know whence I got the notion. What does the word whence refers to? ताले जो whence कुहा जायछि whence रो माने एठी कोन? Why, from where, at what time, by whom. कोन? From where माने केउ ठारु. Whence माने अछि एठी केउ ठारु. तापर next question. Gandhi's deep anguish over the gymnastic find stemmed fundamentally from what inner conflict? ताले ताहले गांधीजी को जो जिम्नास्टिक पाई जो जोरिमाना दबा को कुहा जाइथिला हला ताले कोन पाई सेटा तांको मनरे गभीर जंत्रणा देइथिला तांको मानसिक दुख कोन पाई तांको देइथिला एते तांको जो कोन जोरिमाना दबा को कुहा जाइथिला. His inability to afford the 1 or 2 annas, his pain that he was convicted of lying when he had no way to prove his innocence, his anger at his father for not sending a note sooner, his hatred of physical sports. कौन पाई? His pain that he was convicted of lying when he had no way to prove his innocence. ताले तांको मिछ कहबा पई तांको जेतेबेले जोरिमाना दबाको कुहा जाइथिला आउ शेषरे तांको पाखरे कोनोसी उपाय नथिला तांकर इनोसेंस को प्रूव करबाको तांको निरीहता को प्रूव करबाको किछि उपाय नथिला सेटा ही कोन तांको बहुत गभीर दुख देइथिला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Gandhi feel that his earlier belief about gymnastic having nothing to do with education was false notion? ताहले कोन पाई गांधीजी पछरे फील कले कि जिम्नास्टिक पाई तांकर जो भूल धारणा थिला कोन जिम्नास्टिक शिक्षा सहित जिम्नास्टिक रो कोनोसी संपर्क नाही से केतेबेले सेटा को भूल बोली माने कले. He became a professional athlete because he later realized physical training should have as much place in the curriculum as mental training, because he needed gymnastics to learn Sanskrit, because his father told him so. केतेबेले because he later realized physical training should have as much place in the curriculum as mental training. ताले mental training जेभଳି भाबरे दरकार सेभଳି भाबरे physical training ମଧ୍ୟ दरकार. तापरे which phrase precisely demonstrate the Sanskrit teacher's emotional response to Gandhi sitting in the Persian class? ताले ए मानको भितरु को phrase टा कोन बुझौची संस्कृत टीचर को इमोशन. संस्कृत टीचर जेतेबेले कोन पर्शियन क्लास रे गांधी जी को देखिथिले सेतेबेले तांको भावना कोन थिला को phrase टा भितरु बुझौची. The Sanskrit teacher was angry, the Sanskrit teacher was grieved, the Sanskrit teacher was indifferent, the Sanskrit teacher was joyful. कौन? The Sanskrit teacher was grieved. तापरे next question. In the paragraph 7, Gandhi states
this kindness put me to shame. What specific kindness is he referring to? ताले जो paragraph 7 है गांधी जी कहिचंदी this kindness put me to shame. एई जो कण एई जो दयापूर्ण भाव तांको लज्जित करथिला ताले को टाइप रो काइंडनेस कथा से कथा हिचंती कहउचंदी the headmaster remitting his fine, the Persian teacher letting him sit in class, Krishna Shankar Pandya gently urging him to learn his sacred language and offering his help, his father writing a letter for his exemption. Krishna Shankar Pandya gently urging him to learn his sacred language and offering his help. Next question. When Gandhi talks about his ability in paragraph 2, what tone is he establishing? ताले जेतेबेले गांधी जी तांको एबिलिटी विषय रे कहिचंदी तांको दक्षता विषय रे कहिचंदी पैराग्राफ 2 रे ताले से को भली भाव प्रकाश करबा को सेठी चाहिचंदी एक्सट्रीम इग्नोरेंस एक्सट्रीम एरोगेंस डीप सेल्फ depreciation and humility aggressive defensiveness complete apathy कौन deep self deprecation and humility तापरे next question in structural mapping exercise which main theme is associated primarily with paragraph 3 and 4 ताले 3 and 4 रे को विषय रे कहा जाईछि handwriting punishment for absence or laying studying sanskrit headmaster's personality कौन punishment for absence and or laying विषय रे कहा जाईछि next question in structural mapping exercise which main theme is associated with paragraph 5 ताले paragraph 5 रे को विषय रे कहा जाईछि sanskrit and persian gymnastics and cricket bad handwriting and drawing scholarships का विषय कहा जाईछि bad handwriting and drawing विषय रे कहा जाईछि next question during the mock conversation exercise between gandhi and the sanskrit teacher what nickname is used by the teacher ताहले गांधीजी आ संस्कृत टीचर जिते कथबार्ता हेउथिला कोन संस्कृत पढ़िबा पई को निकनेम टा यूज हेइथिला टीचर को द्वारा बापू मोनिया महात्मा करमचंद कोटा मोनिया तापरे next question why is the word desert in paragraph 2 significant in the context of gandhi's punishment ताले paragraph 2 रे जो word desert दिया जाइछि सेटा गांधीजी को पनिशमेंट विषय रे कोन दर्शौछि it means a dry or sandy place it means a sweet dish eaten after meal it refers to what one deserves emphasize his guilt over the moral falling it refers to him abandoning his duties कोन it refers to what one deserves emphasizing his guilt over the moral falling तापरे next according to the text grammar notes on conditional clauses which modal verbs can be used in the main clause of an unreal past conditional will shall must or ought to would should could or might can may will or should do does did or done कोन would should could or might को use करा जाय परिबो then transform the sentence based on the grammar rules provided the farmer worked hard he reaped a rich harvest ताले कोन हो बाबत कोडा करेक्ट हो if the farmer had worked hard he would reap a rich harvest if the farmer had not worked hard he would not have reaped a rich harvest if the farmer worked hard he had reaped a rich harvest the farmer would reap if he had worked कोन हो if the farmer had not worked hard he would not have reaped a rich harvest आमे पढिबा ग्रामर रे एगुडा सब पढिबा ठीक अछि ताले what does the vocabulary exercise suggest as the single word replacement for not mortal in the sentence the soul is not mortal ताले not mortal को आमे कहा द्वारा रिप्लेस करि परिबा immortal unmortal dismortal incomplete कोन immortal not mortal not mortal को आमे कोन कहि परबा immortal बोली कहि परबा next question
Which word accurately completes this sentence based on the prefix exercise? Swarupa's achievement is dash. Unbelievable, unbelievable, disbelievable, misbelievable. कौन होगा? Unbelievable. तापरे next question. कौन देची? How did Gandhi's perspective on physical education contrast between his youth and his adulthood? ताले को भली भाबरे पार्थक्य दर्शाउची गांधीजींकर मनरे थिबा धारणा जिम्नास्टिक को नेकी बा फिजिकल एजुकेशन को नेकी तांकर यूथ बेले आउ तांकर बड़ होई सरला पर एडल्टहुड बेले कोन पार्थक्य दर्शाउची? Youth, essential for sports, adulthood, irrelevant. Youth, waste of time or unrelated to education, adulthood. Vital curriculum equal to mental training. Youth, forced by father, adulthood, forced by headmaster. Youth, fun, happy, adulthood, boring task. Kota? Second haba, youth, waste of time or unrelated to education, adulthood. Vital curriculum equal to mental training. Next question. What ultimate conclusion does Gandhi draw regarding his failure to thoroughly learn Sanskrit? ताहले लास्ट को से गांधी जी संस्कृत पढ़ेवा विषय रे बा तांकर संस्कृत पढ़िबारे सी जो फेल्युअर हेथिले से कोन कहिसंदी लास्ट रे तांकर कंक्लूजन कोन थिला? It did not matter in the end. He deeply regrets not acquiring a more thorough knowledge. He blames Krishna Shankar Pandya. He feels he learned enough from Persian. कौन? He deeply regrets not acquiring a more thorough knowledge. जेहेतु से भल किरी पढ़ी नथिले सेथिपाई से कौन तांकर असफलता संस्कृत न पढ़िबार असफलता विषय रे कहिथिले. तापरे in the text the phrase repair the neglect specifically relate to which Gandhi cigarette. ताले गांधी जी जो पश्चाताप करिथिले जो कहिथिले रिपेयर द नेग्लेक्ट ता माने आ भितर कोटा रिफ्लेक्ट कोटा डिस्क्राइब करूची? मिसिंग द जिम्नास्टिक क्लास, disrespecting his father, trying later in life to improve his bad handwriting, or failing the Sanskrit exam. कोटा? Trying later in the life to improve his bad handwriting. Next. Or last question. Kona? Complete the conditional sentence from the grammar exercise. The glass bracket is not break if she had not dropped it. Tale complete karo sentence. Kona haba? The glass would not have broken if she had not dropped it. The glass had not broken if she had not dropped it. The glass will not break if she had not dropped it. The glass did not break if she had not dropped it. कोटा हबो ठीक? The glass would not have broke if she had not dropped it. ताले एटा थिला तमरो पूरा 90 ता तमरो MCQs जोटा कि आर दी हाई स्कूल विषय रे थिला. आई होप ग्रामर मु कहिली ग्रामर आमे जेतबेले पढिबा स्टार्ट करबा सेतबेले तमे बुझी परिबो. ग्रामर पय टेंशन नियोनी जमा. ठीक अछि? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो. आउ कमेंट करके जणाओ जदि बुझी न पारुचो कमेंट करके जणाओ. ठीक अछि?